Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss linear probing and quadratic probing techniques. Yesterday lecture we have seen separate chaining and open hashing. Today we will learn open addressing and close hashing in linear probing and quadratic probing. In linear probing, problem is that कि जब हम एक एरे पर नंबर्स को स्टोर करते हैं सो सेम लोकेशन पर मोर देन वन एलिमेंट्स जब इंसर्ट करते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन. मीन्स कि एक ऑलरेडी एलिमेंट उस पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर है, आफ्टर दैट न्यू एलिमेंट हम उसी इंडेक्स पर स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन. सो इन दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग 4 की वैल्यूज 21, 22, 11 and 32. Here k mod 5, we are taking number of elements 5, or we can take 4, but here I am taking 5. So k mod 5, so array make array index 0 to 4 because we have maximum number 5, yeah, n equals to 5, so index 0 to 4. Here 21 mod 5 equals to remainder 1, so 21 will store in index 1. Again 22 remainder mod 5 equals to remainder 2, so here is 22 is stored in index 2. Again here 11 mod 5, 11 mod 5 equals to 1, means again occurs problem here because 11 mod 5 equals to 1, remainder 1. so remainder 1 की वजह से इंडेक्स 1 में ऑलरेडी क्या फील्ड है यहाँ पर 21. so this is the collision. so how to remove this collision? so this is the formula, h of I x equals to h of k plus fi mod size or n. so here h of k equals to remainder, means 11 mod 5 equals to 1, so 1 plus I equals to 1. I अब 1 to अप टू n तक जाएगा जहाँ तक यहाँ पर आपके पास एरे है, तो 1 प्लस 1 मॉड 5 इक्वल्स टू 2. सो अगेन यहाँ पर 2 में ऑलरेडी 22 फील्ड है, सो वी विल चेक फॉर i इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पर आपका हैशिंग 2 इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर आपका 1 मिला था, 1 प्लस 2 मॉड 5 इक्वल्स टू 3. सो यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये इंडेक्स 3 फ्री था, सो यहाँ पर 11 विल स्टोर इन इंडेक्स 3. नेक्स्ट एलिमेंट आपका है 32 मॉड 5, सो विल गेट रिमाइंडर 2. सो इंडेक्स इन 2 ऑलरेडी फिल्ड, so this process again repeat. so 2 plus 1 remainder 5 equals to 3, but 3 already filled. so again we will check for next array, next index. so 2 plus 2 mod 5 equals to 4, so 32 will store in index 4. so this is called linear probing. or we can see another example for linear probing. we take 7 element 50, 700, 76, 85, 92, 73, 101. here we have 7 key values. we will store without collision using linear probing. so here draw the empty hash table with 7 buckets, start from index 0 to 6. in step 2 we'll store first element, that is 50. so 50 mod 7 equals to 1, so 50 will store in the index of 1. in step 3rd, next element 700, so 700 mod 7 equals to 0, so 700 will store in index array index of 0. again
step 4 we have a 76, so we will find mod 76 mod 7 equals to 6. So 76 will store in array index of 6. नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 85, so we will find mod 85 mod 7 equals to 1, but we have already in index 150, so here collision occurs. So handle the collision. Linear probing technique, keep probing linearly until the empty bucket is found. यहाँ हम 1 by 1 linearly फाइंड करेंगे जब तक हमें कोई empty bucket नहीं मिलता. So that यहाँ पर 50 से next bucket आपका free था, so next bucket आपका यहाँ पर after 50 85 को यहाँ पर स्टोर करेंगे. Then next है step 6, key value is 92. Here find mod value 92 mod 7 equals to 1. So again in index 150 is stored. So here again collision occurs. So linear probing technique keeps probing linearly until an empty bucket is found. जब तक कोई empty bucket नहीं मिल जाता index 1 से. तो index 1 के बाद next आपका index 2 है, वो भी ऑलरेडी फिल्ड है. नेक्स्ट इंडेक्स 3 आपका फ्री है, सो यहाँ पर 92 विल स्टोर इन इंडेक्स 3. नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 73 mod 7 equals to 3, but in index of 3 is already stored, so we will find next bucket until that is not empty. So here we can see array index of 4 is empty, so 73 will store in array index of 4. नेक्स्ट आपकी वैल्यू है 101 mod 7 equals to 3. So again 3 is already filled, so we will check next empty bucket. So index 5 is empty, here index 5 is empty, so we will store 101 in index number 5. Next we will see quadratic probing. In quadratic probing, here only one difference between linear probing and quadratic probing. यहाँ पर fi के प्लेस में हम यहाँ पर i स्क्वायर फाइंड करते हैं इन एवरी टाइम. यहाँ पर हम i1 2 अप टू n फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर i स्क्वायर फाइंड करते हैं. i1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. h of i x इक्वल्स टू हैश की प्लस fi mod साइज. तो here size we take again 5. We have 4 elements 21 22 11 and 32. So here this is the 0 index, this is a 1 2 3 and 4. So 21 mod 5 equals to 1, so 21 will store in index of x of 1. Again next element is 22 mod 5 equals to 2, so remainder 2, so 22 will store in index of 2. Again 11 mod 5 equals to 1, so here remainder gets 1. So in index of 1 is already 21 is stored, so we will find next quadratic probing. So h of 1 equals to 1 here 1 is a mod 11 mod 5 equals to 1, so 1 plus I square. Here I equals to 1 mod 5, so I square 1 equals to 1, so 2 mod 5 equals to 2, but already filled is already filled. So we will check for I plus 1, so here 2, so 1 plus 2 square mod 5 equals to 0, so we will check the index of 0. Here this is empty, so we will store 11 here. So again next element we have a 32 mod 5, we will get remainder 2, but 2 is already filled,
here stored 22. So we will find like this example. So here we will write in place of 1 is 2 plus 1 square mod 5, we will get 3. So here store in array index of 3 will store 32. I hope you guys understand the linear probing and quadratic probing concepts. Thank you so much.